Welcome to Short English Stories with Hindi Translation by Clarity Spoken. In this podcast, we bring you engaging short stories in English, followed by a clear and easy Hindi translation. Whether you're learning English, love stories, or just want to improve your language skills, this podcast is the perfect way to listen, learn, and enjoy. Let's start. I have a friend named Monty Roberts who owns a horse ranch in San Isidro. He has let me use his house to put on fundraising events to raise money for youth at risk programs. The last time I was there, he introduced me by saying, I want to tell you why I let Jack use my horse. It all goes back to a story about a young man who was the son of an itinerant horse trainer who would go from stable to stable, racetrack to racetrack, farm to farm, and ranch to ranch, training horses. As a result, the boy's high school career was continually interrupted. When he was a senior, he was asked to write a paper about what he wanted to be and do when he grew up. That night, he wrote a 7-page paper describing his goal of someday owning a horse ranch. He wrote about his dream in great detail, and he even drew a diagram of a 200-acre ranch showing the location of all the buildings, the stables, and the track. Then he drew a detailed floor plan for a 4,000 square foot house that would sit on a 200-acre dream ranch. He put a great deal of his heart into the project, and the next day he handed it in to his teacher. 2 days later, he received his paper back. On the front page was a large red F with a note that read, See me after class. The boy with the dream went to see the teacher after class and asked, Why did I receive an F? The teacher said, This is an unrealistic dream for a young boy like you. You have no money. You come from an itinerant family. You have no resources. Owning a horse ranch requires a lot of money. You have to buy the land. You have to pay for the original breeding stock, and later you'll have to pay large stud fees. There's no way you could ever do it. Then the teacher added, If you will rewrite this paper with a more realistic goal, I will reconsider your grade. The boy went home and thought about it long and hard. He asked his father what he should do. His father said, Look, son, you have to make up your own mind on this. However, I think it is a very important decision for you. Finally, after sitting with it for a week, the boy turned in the same paper, making no changes at all. He stated, You can keep the F and I'll keep my dream. Monty then turned to the assembled group and said, I tell you this story because you are sitting in my 4,000 square foot house in the middle of my 200-acre horse ranch. I still have that school paper framed over the fireplace. He added, The best part of the story is that 2 summers ago, that same school teacher brought 30 kids to camp out on my ranch for a week. When the teacher was leaving, he said, Look, Monty, I can tell you this now. When I was your teacher, I was something of a dream stealer. During those years, I stole a lot of kids' dreams. Fortunately, you had enough gumption not to give up on yours. Moral: Don't let anyone steal your dreams. Follow your heart. No matter what, no dream is too big or too small when one works hard to live it. One should always try making dreams come true, no matter what. Now, चलिए इसे हिंदी में पढ़ते हैं। तो कहानी ये थी कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम
मॉन्टी रॉबर्ट्स है, जो सैन इसिड्रो में एक घोड़ा फार्म का मालिक है। उसने मुझे अपने घर का उपयोग करने दिया ताकि मैं जोखिम में पड़े युवाओं के लिए धन जुटाने वाले कार्यक्रम आयोजित कर सकूं। जब मैं पिछली बार वहां गया था, तो उसने मेरा परिचय कराते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जैक को अपने घोड़े का उपयोग क्यों करने देता हूं। यह सब एक कहानी से जुड़ा हुआ है, जो एक युवा लड़के की है, जिसके पिता एक घूमंतु घोड़ा प्रशिक्षक थे। वे अस्तबल से अस्तबल, रेस ट्रैक से रेस ट्रैक, खेत से खेत और फार्म से फार्म जाते और घोड़ों को प्रशिक्षित करते। इस वजह से लड़के की स्कूल की पढ़ाई बार बार बाधित होती रही। जब वह 12वीं कक्षा में था, तो उसे एक निबंध लिखने के लिए कहा गया कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। उस रात उसने 7 पन्नों का एक निबंध लिखा, जिसमें उसने अपने सपने को विस्तार से बताया कि एक दिन वह एक घोड़ा फार्म का मालिक बनेगा। उसने अपने 200 एकड़ के फार्म का एक नक्शा भी बनाया, जिसमें सभी इमारतों, अस्तबलों और ट्रैक के स्थान को दर्शाया गया था। फिर उसने 4000 वर्ग फुट के घर का एक विस्तृत फर्श योजना तैयार की, जो उस 200 एकड़ के सपनों के फार्म में स्थित होगा। उसने इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा दिल लगा दिया और अगले दिन इसे अपने शिक्षक को सौंप दिया। 2 दिन बाद जब उसे अपनी कॉपी वापस मिली, तो पहले पन्ने पर एक बड़ा लाल एफ लिखा था और साथ में एक नोट था, कक्षा के बाद मुझसे मिलो। जब वह लड़का शिक्षक के पास गया और पूछा, मुझे एफ ग्रेड क्यों मिला? शिक्षक ने कहा, यह सपना एक छोटे लड़के के लिए अवास्तविक है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम एक घुमंतु परिवार से आते हो। तुम्हारे पास कोई संसाधन नहीं है। एक घोड़ा फार्म के मालिक बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तुम्हें जमीन खरीदनी होगी। तुम्हें अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदने होंगे और बाद में भारी शुल्क देना होगा। तुम्हारे लिए यह संभव नहीं है। फिर शिक्षक ने कहा, अगर तुम इस निबंध को एक अधिक यथार्थवादी लक्ष्य के साथ फिर से लिखते हो, तो मैं तुम्हारे ग्रेड पर पुनर्विचार करूंगा। लड़का घर गया और इस पर बहुत देर तक विचार किया। उसने अपने पिता से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पिता ने कहा, देखो बेटा, यह निर्णय तुम्हें खुद लेना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। आखिरकार 1 सप्ताह विचार करने के बाद लड़के ने बिना कोई बदलाव किए वही निबंध फिर से जमा कर दिया। उसने कहा, आप एफ ग्रेड रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने सपने को रखूंगा। मॉन्टी ने फिर सभी उपस्थित लोगों की ओर देखा और कहा, मैं आपको यह कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इस समय मेरे 4000 वर्ग फुट के घर में, मेरे 200 एकड़ के घोड़ा फार्म के बीच में बैठे हैं। मेरे पास अब भी वह स्कूल का निबंध फ्रेम करके मेरे फायरप्लेस के ऊपर टंगा हुआ है। फिर उन्होंने जोड़ा, इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि 2 साल पहले वही शिक्षक अपने 30 छात्रों को मेरे फार्म पर 1 सप्ताह के लिए कैंपिंग करने लाए थे। जब वे जाने लगे, तो उन्होंने मुझसे कहा, देखो मॉन्टी, अब मैं तुम्हें यह सच बता सकता हूँ। जब मैं तुम्हारा शिक्षक था, तब मैं कई बच्चों के सपने चुराने वाला व्यक्ति था। उन वर्षों में मैंने कई बच्चों के सपनों को कुचल दिया। सौभाग्य से तुम्हारे पास इतना साहस था कि तुमने अपने सपने को नहीं छोड़ा। शिक्षा, मॉरल, किसी को भी अपने सपने चुराने मत दो। अपने दिल की सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता, जब तक कि हम उसे पूरा करने के लिए मेहनत न करें। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए।